Hey everyone, welcome to today's video. So today's topic is derivative of a function. So consider we have d by dx of f of x. Then this is read as derivative of f of x, derivative of f of x with respect to x, with respect to x. So how will you read this? d by dx of d by du of f of u. Then it will be read as derivative of, now instead of f of x we have f of u and with respect to u. For example, we know the standard formula derivative of sin x is cos x. Then what will be the derivative of sin u with respect to u? So it will be cos u. Similarly, we know the standard formula derivative of x power n is n x to the power n minus 1. So can you guess this? d by du of u power n. So it will be n u to the power n minus 1. Now, similarly, derivative of e power x is equal to e power x. So therefore, derivative of e power u with respect to u will be e power u. ओके, तो इसमें फंक्शन में भी वेरिएबल जो है वही डेरिवेटिव में भी रहेगा. नाउ कंसीडर द केस वी हैव डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ यू बट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो फंक्शन में यहाँ u है और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है. तो इसको हम चेन रूल से सॉल्व करते हैं एंड दिस चेन रूल इज वी हैव टू राइट दिस एज दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u of f of u into we write here du by dx. So this is the chain rule. ओके, जब यहाँ फंक्शन में u है, डेरिवेटिव में विथ रिस्पेक्ट टू x है, सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू यू. यहाँ हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू लिखते हैं एंड यहाँ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय डी यू बाय डी एक्स. नाउ इस रूल का यूज करके हम कुछ डेरिवेटिव के एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो फॉर एग्जांपल कंसीडर फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin of x square. So to find derivative of sin x square, let capital D is the derivative of sin x square. अब यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं. So before solving this, recall again the two standard formulae. So the first formula is derivative of sin x with respect to x is cos x. And second formula is derivative of x power n with respect to x is n x to the power n minus 1. Now we have to find this derivative. Okay, derivative of sin x square. So to find this, let us assume that x square is equal to u. X square is equal to u. Then d is equals to, this becomes derivative then this capital D is nothing but derivative of sin x square. So
It is nothing but derivative of sin u. अब यहाँ पर फंक्शन में है u, ओके, इन द फंक्शन वी हैव u एंड डेरिवेटिव में है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ हम चेन रूल यूज करेंगे. इंस्टेड ऑफ डी बाई डी एक्स राइट डी बाई डी यू, साइन यू एज इट इज. और जब भी यहाँ डी बाई डी यू लिखेंगे तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बाय डी यू बाय डी एक्स. नाउ what is the derivative of sin u with respect to u? It is cos u into this du by dx as it is. But what is u? U is nothing but x square. So therefore this capital D is nothing but cos of u. U means x square into du by dx. Du by dx means d by dx of x square. Now use this formula. Derivative of x power n is n x to the power n minus 1. So therefore derivative of x square is n की जगह 2 आएगा. So it is 2 into x to the power 2 minus 1 and hence it will be 2x to the power 1, that is 2x. So this equals to cos of x square into derivative of x square is 2x. So the final answer is twice x into cos of x square. So this is the required answer. Now consider the another example. Find derivative of log of cos of 3x. So here to find this, let this capital D is a derivative of log of cos of 3x. So before solving this, recall the formula. What is the derivative of log x with respect to x? Derivative of log x with respect to x is 1 by x. Similarly, derivative of log of u with respect to u, ये हो जाएगा 1 by u. So to solve this d, let substitute this cos of 3x is equal to u. So therefore this d is nothing but derivative of log of u with respect to x. अब यहाँ पे फिर से we have function of u and derivative with respect to x. तो यहाँ पे chain rule comes in action. तो instead of d by dx we write here d by du, log u as it is. और जब भी हम यहाँ पे d by dx की जगह d by du लिखेंगे हमें उसे मल्टीप्लाई करना है बाय du by dx. Okay, so what is the derivative of log u with respect to u? We know it is 1 by u and this du by dx as it is. But what is u? U is equal to cos of 3x. So therefore d is equals to, it is 1 upon cos 3x into d by dx of u. U means cos of 3x. Now again we have to find this derivative of cos 3x. So there is no standard formula of derivative of cos 3x, but recall again here, recall derivative of cos x with respect to x is minus of sin x. If we write x as u, so derivative of cos u with respect to u, can you guess this? It will be minus of sin u. So here put 3x is equal to u. So therefore this d is equal to 1 upon cos 3x into d by dx of cos, instead of 3x we write here u. Again we reach here to the situation function में u है
और यहाँ डी बाई डी एक्स है। तो फिर से वी यूज द चेन रूल, 1 cos 3x एज इट इज, डी बाई डी एक्स की जगह हम लिखेंगे डी बाई डी यू ऑफ cos u, और जब भी डी बाई डी एक्स की जगह डी बाई डी यू लिखा, हमें वहां पे उसके मल्टीप्लाई करना है बाय या डी यू बाई डी एक्स। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 cos 3x इंटू what is डेरिवेटिव ऑफ cos u विथ रिस्पेक्ट टू u, दोनों जगह u है, इट इज माइनस ऑफ साइन u इंटू du by dx, but what is u? U is equal to 3x, so therefore this d is equals to 1 cos of 3x into minus of sine of, instead of u we have 3x, into derivative of u means derivative of 3x with respect to x. Now this is minus of sin 3x अपॉन cos 3x इंटू डेरिवेटिव में ये 3x में 3 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर चले जाएगा, वी हैव डेरिवेटिव ऑफ x, सो इज इक्वल टू माइनस साइन 3x अपॉन cos 3x हो जाएगा tan 3x इंटू दिस इज 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो रीजन इज सिंस sin 3x upon cos 3x is nothing but tan 3x. So therefore this d is equal to minus 3 into tan 3x. Okay. Now one last example. Consider, find derivative of, yes, e to the power x cube, e to the power x cube. So solution, let us assume that this capital D is nothing but derivative of e to the power x cube. So here put x cube is equal to u. So therefore this d is equal to d by dx of e to the power u. अब यहां पर फिर से फंक्शन में u है और डेरिवेटिव में x है। नाउ हम यहाँ पर d बाई डी एक्स की जगह लिखेंगे d बाई डी यू और e पावर u एज इट इज। जब भी हम d बाई डी एक्स की जगह d बाई डी यू लिखते हैं तो हमें वहां पे उसको मल्टीप्लाई करना है बाय डी यू बाई डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू d by what? Okay, we have standard formula, derivative of e power u with respect to u is e power u. Okay, this derivative of e power u with respect to u, दोनों जगह u है तो ये e power u into this is du by dx. Okay, but u is equal to x cube, so therefore this d is equal to e power x cube into d by dx of u. U is x cube. Now we have this formula, derivative of x power n is n x to the power n minus 1. So therefore derivative of x cube is 3x to the power 3 minus 1. Okay, 3 minus 1, that is 3x to the power 2. So this is equal to d is equal to e to the power x cube into 3x square. So required answer is 3x square into e to the power x cube. So this is the required answer. So this was all about some of the examples of derivative. So thank you very much and we will meet in the next video.